Almost every city in India has one of these. A massive fire broke out at a landfill site in North Delhi. Fire at Kochi's waste treatment plant. Mega city Mumbai is rapidly running out of space to dump garbage. I wanted to find out if there is a solution to the problem of legacy dump sites in India, and if there are challenges to that solution. And all the studies and searches led me to Indore. This commercial capital of the central state of Madhya Pradesh has been adjudged the cleanest city in India for the last 6 years. But we came back with more questions than answers. तो जहाँ खड़े हैं इस जगह पे वेस्ट के पूरे पहाड़ हुआ करते थे। We are standing on the landfill. तो इंदौर का लेगेसी डंप साइट है, वो आज की डेट में किसी भी सिटी फॉरेस्ट जैसा दिखता है। जी। लैंडफिल का ड्रोन शॉट मत लेना। तो इसका मतलब तो सिर्फ पॉजिटिव जो है उसी का ड्रोन शॉट ले सकती हूँ, है ना? उसको जो भी है मैंने तो आपको बता दिया। धूम धड़ाका ढोल धमाका सेलिब्रेशन हो। The Indore government says their robust system of source segregation has been the game changer for the city. We got exclusive permission to have a first-hand experience on how waste is collected, segregated and processed in the city. A government representative was assigned to accompany us at all times during the shoot. गीला कचरा, सूखा कचरा, and this is compost are especially used for our garden. अच्छा, ये कैसे करते हो आप लोग? ये जो गीला होता है जिससे पत्ती वगैरह होती है, इसमें वो नगर निगम से हमें खाद मिलती है। वो खाद को डालते हैं और ये एक बकेट फुल हो जाती है, फिर सेकंड बकेट को यूज करते हैं। और जो पुरानी वाली है उसको हमारे ऊपर गार्डन बना रखा है, अच्छा गार्डन में यूज करते हैं। अच्छा, तो ये वेस्ट नहीं बाहर जाता? नहीं, वेस्ट बाहर नहीं जाता। ऐसा इंदौर में क्या हुआ कि लोग जागरूक हो गए और क्या मतलब व्हाट वाज द चेंजिंग फैक्टर? देखिए, नगर निगम में बहुत सारे अच्छे काबिल अफसर हैं, उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है उसको जनता ने समर्थन दिया। बाकी का इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सुबह से काम पे लग जाते हैं, जो इनका मोटिवेशन होता है, जो इनका करने का लक्ष्य होता है वो पूर्ण रूपेण करते हैं, जनता का सहयोग करते हैं, तो जनता भी उनका सहयोग करती है। डोर टू डोर कलेक्शन करके आती हैं। 6 टाइप्स अलग अलग सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन होने के बाद में गाड़ियाँ यहाँ पे आती है, ट्रांसफर स्टेशन है। टोटल ऐसे 10 ट्रांसफर स्टेशन है जो अलग अलग लोकेशन पे पूरे इंदौर में बनाए। गाड़ी सबसे पहले यहाँ पे आती है, यहाँ से आने का सबसे पहले इसका वे होता है, सबसे वेइंग पे जाती है। ड्राइवर है। क्या है? डायपर। ये आप हाथ से निकाल रहे हो, आपको गंदा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। हाँ? नहीं लग रहा। कभी नहीं लगता कि अब आदत हो गई है? आदत हो गई मैडम, बात ही नहीं आती किसी चीज की। From these transfer stations, the waste goes for processing. On a patch of land which was earlier part of their main dump site, the Indore government has set up 2 plants, one for recycling plastic and another to produce bio-CNG from wet waste. When Nepra was not here, here was a big trenching ground. बहुत बड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड था, बहुत एरिया ऐसा पूरा कचरा हुआ करता था। उस समय कुछ फीमेल वर्कर्स यहाँ पर थी जो अपना घर चलाने के लिए इस ट्रेचिंग ग्राउंड पर वर्क करती थी। तो नेप्रा ने बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पर वर्क करके इन सभी फीमेल वर्कर्स को यहाँ ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट दिया है। सभी को अपना अपना टास्क दिया जाता है कि आप आज आटा पाउच की रिकवरी करेंगे, आप मिल्क पाउच की करेंगे, आप मिक्स प्लास्टिक उठाएंगे, आप पेट बॉटल्स उठाएंगे। बहुत कुछ अलग हुआ। पहले क्या गीले में, सूखे में, बारिश में सब में काम करते थे, पहले बोरे उठाते थे, दिक्कत आती थी। अभी हम मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर कंपनी में और बहुत सुविधा भी मिली है। This biogas plant in Indore is touted to be Asia's largest.
During its inauguration, PM's office promised that 75 municipalities across India are slated to get such bio-CNG plants over the next 2 years. The renewable fuel from segregated wet waste is used to run city buses. So is there any amount of pollution that happens because of this process? इसमें सिर्फ एक चीज़ और ये है कि अभी जो CO2 निकल रहा है वो CO2 के लिए भी हम लोग जो है रिकवरी यूनिट लगा रहे हैं. For the waste that cannot be processed or recycled, the final destination in an ideal waste management system is the scientific landfill. Dev Gudaria, on the edge of the city, used to be an 100-acre open dump site and a ground for dumping all sorts of mixed waste. The land was reportedly reclaimed through a scientific process of legacy waste removal in 2018. A part of the dump site has now been turned into a garden. A part has been utilized for setting up the processing plants, and the rest is used as a sanitary landfill or scientific landfill as per the Indore Municipal Corporation. This is where we were restricted from objectively filming. आप लैंडफिल का ड्रोन शॉट मत लेना. आप इधर का जितना भी फॉरेस्ट है या आपको जितना प्रीमाइसेस के अंदर का है, गैस प्लांट का देखना है या फिर आपको इसका देखना है, क्या बोलते हैं, नेपरा का ऊपर से शॉट. So इसका मतलब तो सिर्फ पॉजिटिव जो है उसी का ड्रोन शॉट ले सकती हूँ, है ना? जो भी है मैंने तो आपको बता दिया. नहीं तो वो कंट्रोल में नहीं हो पाएगा हमारी तरफ से. जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको बता दिया. The many attempts to stop me from filming the landfill piqued my curiosity. When our team tried to take drone footage, our camera was forcefully seized without informing the reason. We repeatedly asked the municipal commissioner to respond to a query on why our footage was withheld. Before our visit to the landfill, she had told us this. ऐसा नहीं है कि हमने एक डंप साइट क्लियर की और दूसरी डंप साइट तैयार कर दी. किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो चेन है उसमें सक्सेसफुल मॉडल की सक्सेस सिर्फ इस एक बार से देखी जाती है. एट द एंड ऑफ द डे हम अपने साइंटिफिक लैंडफिल साइट पे कितना वेस्ट भेज रहे हैं. तो ये 10% हो सकता है टोटल वेस्ट जनरेशन का, पर हमारा सिर्फ 4% है. तो आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए मैंडेट भी एक है कि हम इसको 0 तक लेकर के जाएं. IAS officer and the 2018 mayor Ashish Singh had claimed he had led the charge of clearing the dump site through a scientific process to free up the land for the city forests and the processing plants. I looked up the Google Earth images since 2018, and we do see a change happening in the dump site area. Unfortunately, since we were not allowed to go inside the landfill or take drone footage, we couldn't point to exactly what the corporation was worried about. So we took our questions and doubts to environmental experts who have been researching Indore's waste management policy for years. From the evidence, from the satellite imagery or the video you have just played, it's very, very difficult to apparently it looked like some drain silts which they have dumped, right? Now drain silts are again inert, so you can put drain silt, there's no harm. But the ground, whether it is lined or unlined, is very difficult unless we go and see it for ourselves. But Biswas said questions on landfill shouldn't take away from what Indore has been able to achieve in comparison to other cities. Indore model economically, financially, environmentally, way better. So they are already in a next level, even if they are putting some inerts here and there, right? I am going to give them that discount, considering what they have achieved already, right? They are generating humongous amount of revenue by producing 17 tons of bio-CNG every day. There can be small holes here and there, even in the best practices. When you say best practices, the ideal word should be better practices. While we did find the answers to whether there could be a solution to the big waste problem in Indian cities, we couldn't ascertain the sustainability of it. But researchers believe that cities like Indore is a great head start towards progress.